कौन सा है ये? 2005 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं 2005 वो सब पैराग्राफ 5 द फेडरल गवर्नमेंट जी जी फेडरल गवर्नमेंट से ऊपर की 3 लाइन एंड देन फेडरल गवर्नमेंट पैरा 5 में भी और फिर देन 6 भी ये तो मर्डर्स एंड किलिंग्स हुई थी ना सेक्टेरियन वायलेंस जी लेकिन वो आदमी ये रेलेवेंट नहीं है जी। नेक्स्ट सर जो एक्सक्लूसिवली मिसिंग पर्संस को जजमेंट है सर दूसरी PLD 2014 ये सुओ मोटो एक्शन लिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 305 रेलिवेंट इसके पैरा है सर 16 और 17 पैराग्राफ 16 and 17 में लोग पेज है 320 As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture. It is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The acting Defence Secretary through the though he apparently did his best could not achieve the object for which ये रेलेवेंट है जी मतलब हाँ ठीक है ये तो रेलेवेंट है जी मतलब एनी अदर केस जी सर नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर 17 जी 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं 17 पेज अगले पे है 321 पे इट मे बी out of context to note that in somewhat identical circumstances the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so and so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006 despite the fact that the Nepal had not ratified the same. Correct. आगे जी सर ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस हवाले से अदर जजमेंट जी सर दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है माय लॉर्ड आथर जज हैं धरना केस में फैजाबाद धरना केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 उसका एजेंसीज के रोल के हवाले से भी 318 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है पैरा 43 माय लॉर्ड पैरा 43 42 मतलब 42 से पेज 348 The report submitted पैराग्राफ इससे मिसिंग पर्सन का क्या ताल्लुक है सर रोल ऑफ दी इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उनका कितना है क्या रोल होना चाहिए क्या उनका इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन अपने मैंडेट में रहे स्पेसिफिकली कुछ है स्पेसिफिकली मिसिंग पर्संस का तो एज सच नहीं लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसमें रेलेवेंट है वो जो अभी लोगों को हटाया गया है यहाँ से जो कर रहे थे वो प्रोटेस्ट जी उनको तो प्रोटेक्शन मिलती है कि वो पैराग्राफ पढ़िए ना आप जी लॉफुल असेंबली वो कर सकते हैं ये देखिए पैराग्राफ 2 पढ़िए पैराग्राफ 53 का जी माय 53 जी सब 53 का 2 पढ़िए जी Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. ये तो relevant होगा for the people who are protesting. My lord. फिर पैराग्राफ 3 भी पढ़ ले जी सर protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable.
The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which is must, which it must. I'm surprised you are citing this case. میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے جناب کو کہا تھا جی سر ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے ودن دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں اور کورٹ ساتھ. اگلا بتائیے. اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر, میں جناب کو چکا اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں. PLD 2022 سندھ 264 جی 264 سر. PLD 2022 سندھ PLD 2022 سندھ 264 یہ بھی مسنگ پرسنز کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف نہیں ایکچوئل کیا چیز پڑھے مجھے سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل باتیں ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی یہ دو ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر, وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں. مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن یہ اسی حوالے سے کہ جو ایک تو ہے سر PLD 2021 اسلام آباد پیج 1 جی ریلیونٹ پیج پیرا 3, 4 and 5. The incident یہ وہ متی اللہ جان والا کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. The incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کل تو آپ متی اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے, آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا, پہنچا نہیں تھا وہاں تک. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. ان کی ذمہ داری ان کی شاید انٹرونشن سے ہی یہ جلدی باہر آئے ہوں, ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا. نہیں آپ کا غلط فہمی ہے. آنریبل کورٹ کی بھی انٹرونشن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کچھ فہمی تو ہو سکتی ہے, غلط فہمی شاید نہیں. آپ سننے گے تو بتا دیں گے آپ کو. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں ہم بہتر نہیں جانتے. یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے یہ ہو گئی تھی ریکارڈ. کیمرہ لگا ہوا تھا. کیمرہ لگا ہوا تھا جی, اس کا ریفرنس ہے جی. شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار, تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. It was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken a stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state
come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names. 2 मिनट का केस ये सॉल्व होता था 2 मिनट में. नहीं, देखिए या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐश कर लें. हर चीज़ें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे. ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था. मैं वही गुजारिश नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस. बस ठीक है, अच्छा, ओह तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो. ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था. She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं. अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा कि जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता. आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए. सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस. सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है. और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूँगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा. बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया. अब सर मैं एक गुजारिश करूँ इस हवाले से. रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर. या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू. ये सुन लीजिए, इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे. हमने कहा हमारे सामने आके बात करें. क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की. बिल्कुल क्यों. वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है. नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है. वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की. ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना. हमारा काम जरा सा देखें, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स. तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है. अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए FIR काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें. अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं. हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे. ये आपने नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर. प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर. आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी. जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences. ऐसे कैसे बाहर जाते हैं? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी. वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा. 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months. फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा. शायद वो, बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है. मैं इस पे आगे चलता हूँ. शाहीन साहब, यू आर अब नाउ आई विल यूज अनदर वर्ड. कैन यू प्लीड अ केस ऑफ अ पर्सन नॉट बिफोर अस? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? सर अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल है जिसका आपने जिक्र किया उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे. मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी करें ना. फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है. नहीं, हमारा देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा. हम ये कहते हैं माय लॉर्ड, कमीशन जब बनेगा, हद तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की, उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन जी जी, वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे. वेट फॉर सम टाइम. अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर हम ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे. हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज. अगर आपके जहन में 2-4 ही लोग नहीं सर, ठीक है, नहीं 2-4 नहीं, सभी जो जिस के साथ कोई ज्यादती हुई है या मिसिंग में हैं या जिनके साथ कोई मिसिंग में रहे हैं, तो जनाब ओनली इन रिलेशन टू दी CMA वो आपकी ऑफिस ऑफ. देखिए फिर अब आप तशरीफ रखें, हम दूसरों को सुन लेते हैं ना. नहीं सर, मैं तो अपनी बात बस फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन. देखिए ना अभी एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर होगा ना अभी जब. सर मैं तो जनाब के सामने अर्ज करूंगा, जनाब ने फैसला फरमाना है ना कि मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनाब उसको नहीं इस काबिल समझते कि उसको पार्ट ऑफ माई प्रेयर या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और कौन सी नहीं होती. दैट योर लॉर्डशिप हैज टू डिसाइड. लेकिन मेरे जो
سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لاء سائٹ کرنا ہے. جی کیس لاء ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں, ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گئے نا. جی ہو گیا آبجیکشن ریموو ہو گیا, لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں جناب کو انفارم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ وہ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آ گئے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want they can come to court. Yes. And when they don't want they don't come to court, and then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. جب اس پر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس ایک پولیٹیکل فورم بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی, please don't do this. سر جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر. 1858 جی سر, 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اسے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, now can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھاؤ. یہ امینہ مسعود صاحبہ جی, آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ, آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ, ہماری میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں, تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا, افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سوموٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 پٹیشن. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں, ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف, اس کو اٹھا لیا.
मतलब या ये परवेज मुशर्रफ के साथ कोई उनकी दुश्मनी थी, उसको उठा लिया, कोई रीज़न आपके जहन में है? लॉर्ड, मेरे जहन में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि माय फादर इन लॉ इज आल्सो मिलिट्री पर्सन, इज अ कर्नल रिटायर्ड, और वो उस वक्त मुशर्रफ के सीनियर भी थे। तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई यू थिंक द स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड, और यू नॉट एलिजिंग इट्स द स्टेट? आई थिंक इट्स लापता अफराद केस 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस मसरत हिलाली बेंच का हिस्सा, सारे का सारा मामला उन्होंने सुना, और अभी भी एक और मामले के ऊपर इसी से जुड़ी दरख्वास्त के ऊपर लापता अफराद केस में ही समाअत जारी है। आज जो अहम तरीन रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने, उसके बारे में भी आपको बता दें। आज उन्होंने शोएब शाहीन साहब से कहा कि कल तक तो आप सहाफ़ी का नाम तक नहीं ले रहे थे, आज आपको इसका क्रेडिट लेना है। अगर जब आपकी हुकूमत थी तब आपने लापता अफराद के केस को संजीदगी से लिया होता, इस मामले को संजीदगी से लिया होता, तो शायद उसके बाद मामलात ऐसे न होते। या तो आप ऐसी बेबसी दिखा रहे हैं और साथ में हुकूमत चला रहे हैं, ये ना करें, या तो फिर फैसले करें। ये नहीं हो सकता कि आप बाद में केसेस को देखें और बात करें। जी ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है इस वजह से, ये ज़्यादा एक्टिविस्ट है, ये है वो है, तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं ज़रा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है। 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर, तो या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना। वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है। जो अपने आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं उठाया है, मगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है। देखिए, जब तक इंसान को वजह ना पता चले तो फिर कल्प्रिट जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है ना कि भाई किसको फायदा हो रहा है, तो उस तरफ जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है कि ये इसका कोई जातियात का झगड़ा था, या कोई ज़मीन का तनाज़ा था, या वो उसके खिलाफ बात करता था, तो उससे कड़ियाँ जुड़ती हैं। हाँ, ये पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई was he member of some organization which the government did not like, or any case like that? No sir, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ ने जो क्या उम्र थी जब वो he was 41। आपका ये केस कमीशन में चल रहा है, योर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, आपने कोई कमीशन ने 2013 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। क्या उसका क्या ऑर्डर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो ऑब्वियसली क्योंकि है ऑर्डर आपने लगाया इसमें? नो सर, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑर्डर था, बिकॉज आपने लिखा है कि अर्लियर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए हैं, 600 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने इशू किए थे। तो बिल्कुल, that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005। रावलपिंडी घर से निकले हैं, और उनके दोस्त बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहे थे। दोनों ने डेवू बस ली है टू मीट। कहाँ जा रहे थे वो? पेशावर जा रहे थे दोनों। अच्छा, क्यों? उनके एक दोस्त है अब्दुल गनी, उनके साथ मिलने के लिए। तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे। आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप किसको सस्पेक्ट करती है? मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे, जो कि रिलीज पर्सन्स की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो ISI की कस्टडी में थे। उन्होंने देखा था जी, और वो ईद के दिन थे। उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें सामने आई। इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 CMs डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड
इवेंट से परटेनिंग नहीं थी। फिर एक जब JIT बनाते हैं ना, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई हैं, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर सब कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ था, मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे, तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई हैं JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज। सर उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जब वहां से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजंस थी उसकी? उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया। बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा साहब, ये अहम समात लापता अफराद केस से मुताल्लिक़ अभी जारी है, इसके बारे में आपको मजीद भी अपडेटेड रखेंगे। आपको बताएं अहम खबर के बारे में, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल में समाअत, साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इसकी समाअत अडियाला जेल में हुई। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की मजीद समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब अगली समाअत 16 जनवरी को होगी, इसको 16 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। दौरान समाअत मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। एक बार फिर आपको बड़े मामले की तरफ लिए चलते हैं। लापता अफराद केस की समाअत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर आपको दिखाते हैं। 30 जुलाई 2005, तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25 तो कितने साल हुए? 18 साल। जी सर। हाँ 18 ईयर्स हो गए। 18 साल। उस वक्त 40 ईयर्स एज थी। अब 18 ईयर्स हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें, मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखिए, आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, इट्स फंडामेंटल राइट, अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो, या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। हो सकती है, क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ वाज, क्या कनेक्शन है आर्मी से? माय फादर इन लॉ इज अ कर्नल रिटायर्ड। Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the president. क्या मिला उनको? क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मुलाकात किया। उनको मिला, बताया क्या तो किया? उन्होंने उनको यही आदमी है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं? हमारे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे? फिर जी ये तो फिर हम क्या करें? कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप. Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है जो पहले होता था. I don't know, I may be wrong. मगर I've been Chief Justice Bulustan as well, so but तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो हम कर सकते हैं. आप क्या, हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से. बिल्कुल, मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह से आप बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे. quite a lot of torture over these years. Okay, you have a lot of experience. You know, you have more experience than us. Exactly. तो अब आप बताएं, what shall we do for you? My lord, for my case, if for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं कर ना, वो आप सके. हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे. तुम्हारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए. अगर वो दाना वास्ता उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना
पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ये भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. नहीं, उन पे भी आते हैं ना, पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा एजी साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं. GIT में क्या है वो देखिए, वो GIT देख के इनको कम से कम जवाब दे देंगे. वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा. उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. Because she's gone through the process. Yeah. Now, if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord. My lord, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे वगैरह के लोग होते हैं वो अभी बता देंगे, तो हमारे समाज वालों से जो कभी चाहिए जा जाएगा, डिफेंस करेगा. ठीक है. So the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. These are or any other? It's Ministry of Interior essentially. And or Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared. And the new government came and absolved itself. They said, उन्होंने किया था, बता दिया. तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise there's a question mark hanging all through, forever and ever. So my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. Said, right. So she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I have noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं. जी जी. ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में. जी
बताइए। जी सर, आजकल भी हो रहा है ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है। नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं। हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन है। When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना। अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना। कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में, ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी। एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म, बिल्कुल बिल्कुल। एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई पॉलिसी रोक दी जाए, कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with law. If you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. I know this is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf. Naturally, he may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible. But it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who
place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. دیکھیے یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. بھائی کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہوں because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think the state needs to be inclusive. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے, کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن. آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک. محمد شریف ورک. یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں ہوتا سے بتا ہوگا سیکٹری کو, مجھے پتہ نہیں, میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا, پتہ ہے نا. کراچی میں ہمارے جسٹس. آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, منتھلی بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج تک؟ تو بڑی ماشاء اللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا. نہیں کتنی ریکوری منتھلی, کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ ایسے بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر؟ کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر. اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں سر. کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں سر؟ ٹریسٹ کہہ لیں. ٹریسٹ. آپ کی رپورٹ کدھر ہے؟ یہ ہے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھتے وہ سارا دیا ہوا جو ان کے مطابق دیکھتے ہیں. نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کسی کا نام بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ لکھا ہے آپ آج کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے ریکارڈ میں؟ لکھی ہوئی فگر ٹاپ پہ نا, بتا دیجئے نا.
یہ جو ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں کیسز ڈسپوزڈ آف اپ ٹو دسمبر 2022 7001 ڈسپوز آف سے کیا مراد ہے بھائی؟ یا ریکور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ مختلف آپ کے پاس کیٹیگری ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب ریکور ہوتے ہیں بہت سے وہ ریکور ہوتے ہیں جن پہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں فلانا کیس میں کسٹڈی میں. اصل میں سر یہ 4 یہ اس کا مطلب یہ ہے. اب آج کل مسنگ پرسن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس جو کیس آتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے ہمیں. آپ سے یہی تو پوچھ رہے ہیں, آپ کے پاس آج کل کیسز آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سر. آپ کا سیکریٹریٹ کہاں ہے سر؟ یہ G91 میں سر. ہاں G91. یہ کیا گھر ہے؟ نہیں سر, یہ سول ڈیفینس بلڈنگ ہے سر. اچھا, اس کے اندر ہے. نہیں تو آپ کے پاس فار انسٹنس دسمبر 2023 میں کتنی کیسز آئے ہیں فریش؟ سر یہ بتانے لگا 46 کیس آئے ہیں سر. فریش؟ جی فریش. اچھا, ان کا کیا بنا؟ سر یہ پروسیس شروع کر دیا نا اس کا ہمارا. اس سے پہلے ہم JIT بنواتے ہیں, اس کے بعد JIT کیا چیز ہے؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. کیا چیز ہے بتائیں, کون ہوتا ہے اس کا ممبر؟ اس میں SSP انویسٹیگیشن ہوتے ہیں اور ساتھ میں ریپ ہوتے ہیں IB کے, ISI کے, MI کے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے. اس کے 5-6 لوگ. یہ آپ بتائیں, یہ مس جنجو آپ گئی اس کمیشن کے سامنے؟ جس مائی لارڈ جب یہ بنا تھا 2011 آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں؟ مطمئن نہیں ہیں ہم لوگ. ہم لوگ سے مراد ہم اور تمام جو وکٹمز ہیں جو وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. آپ بھی کیس میں ہیں؟ اس میں آپ کے ساتھ انعام صاحب جو کھڑے, آپ بھی اس کیس میں ہیں؟ میڈم آئی ایم ورکنگ ود ہر سر. یہ آپ مطمئن ہیں اس کمیشن سے؟ ناٹ ایٹ آل سر. ناٹ ایٹ آل. کوئی مطمئن نہیں ہے سر. ڈسپوز آف کی ہیں آنریبل نے بڑا. ایک سیکنڈ, لمبی بات نہیں کریں, آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ ڈسپوز آف جو ہے اس میں آپ صرف ہاں یا نہ بتا دیں. سیٹسفائیڈ سر. ایک سیکنڈ اعتزاز صاحب, آپ مطمئن ہیں اس کمیشن سے؟ بس صرف پوچھ رہے مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن, بس اوکے. یہ یہاں جو آج جو کیسز ہیں کوئی مطمئن ہے کمیشن سے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. میں بھی نہیں, کوئی مطمئن نہیں. اچھا, یہ 2023 تک آپ نے 10,088 کیس لکھے ہیں, یہ کب سے شروع ہوئے ہیں 10,088؟ یہ ٹوٹل ہو گئے جو ہمارے پاس. میرا سوال سنیں, 2011 سے سر. دیکھیں آپ کے پاس مائے لارڈ جو پوچھ رہے ہیں نا, آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے. دیکھیے ایک نمبر سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ہمیں نام سے ہے. ٹھیک ہے, فلاں شخص مسنگ ہوا اس تاریخ کو, آپ کے پاس رپورٹ آئی اس تاریخ کو. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کا زمانہ مطلب ایئر ہمیں پتہ چلے گا نا, تو رسپانسبلٹی پھر ادھر جاتی ہے. تو ایسا ڈیٹا آپ کے پاس ہے؟ ایسی ہے, بلکہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا سارا. سنیں نا, آپ نے یہ کاسمیٹک ویلیو ایسی رپورٹ بنی ہوئی ہے, آپ نے لکھ دیا ہے ٹوٹل نمبر آف کیسز اپ ٹو دسمبر 2023 10,088. یہ 10,000 کب سے شروع ہوئے ہیں یہ کیسز؟ یہ اب ان کے ہسبینڈ تو میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلے ایک کمیشن ایک بنایا تھا سپریم کورٹ. آپ کو ایئرلی بنانی چاہیے نا, جو پچھلا ڈسپوز ہو گیا بیک لاگ پورا لے کے چل رہا ہے. آپ یہی نہیں پتا 10,000 کیس کب سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس؟ سر پینڈنگ وہ لکھے ہوئے نیچے, جو پینڈنگ اس وقت ہیں وہ بھی نیچے لکھے ہوئے. یہ 3 لوگوں کا کمیشن ہے, محمد شریف ورک, امان اللہ یاسین زئی صاحب اور جاوید اقبال صاحب, اور جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور کون؟ جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور ڈیلی اسمبل ہوتے ہیں, کیسے آتے ہیں کراچی سے؟ نہیں, وہ کراچی میں کرتے ہیں, اس ان کا کیسز وہاں کرتے ہیں, الگ الگ کرتا ہے, الگ الگ. بلوچستان کے جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں. اور ریکارڈ رکھتے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کے کون ہیں؟ وہ اسلام آباد سے ہی جاتے ہیں, ہمارے جائی صاحب جاتے ہیں یا شریف ورک صاحب جاتے ہیں. اور پنجاب سے؟ پنجاب میں بھی, پنجاب اور فرنٹیئر یہی ممبر ہیں پھر؟ جی 5 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں جی. ہاں 4 ہو گئے جی بالکل. Are they paid or is voluntary work? سر پے ہوتا ہے سر, پے کرتے ہیں سر. اب جو ہائی کورٹ کے ججز ریٹائر ہیں ان کو ہائی کورٹ کا پیکج جو ہوتا ہے وہ ملتے ہیں. اچھا, تو وہ تو ان کو پینشن ملتی ہے ویسے ہی. پینشن تو لیتا ہے نا سر. نہیں تو جو سپریم کورٹ کے ریٹائر ہیں ان کو سپریم کورٹ کی تنخواہ ہے, جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہے ان کو ہائی کورٹ کی تنخواہ. یہی ہے ان کو کیوں ملتی ہے تنخواہ کے علاوہ؟ کیوں کیا جواب نہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی بات. ہاں جی, یہ اٹارنی جنرل صاحب سے ان کا پیکج تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ لاسٹ اٹارنی جنرل سروس کر رہے ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل
Do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up. The presidential order related to the terms and conditions of judges. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges. Whether post-retirement can they, if they are required to do any work. आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. कोई भी रिटायर होता है, जब नई जगह जाता है, उसको वही पैसे मिलते हैं. हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है. दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन. So I was not. No, but there is another order. I'm aware of it. That if a government gives an assignment to a retired judge, that's what they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because I recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है. इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा. अभी हमारी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने. आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोजा साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी. विजिट भी किया है, वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी. बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा. कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे. अच्छा. ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है. अच्छा. मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. अच्छा. वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा. आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है, और उनकी आउटपुट किया है. रजिस्ट्रार बनाया हुआ. ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी माय लॉर्ड, इट वाज अपॉइंटेड अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 इन 2011. नेवर. जी वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है. खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी. वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? माय लॉर्ड, दिस इज SRO 149 था 134 of which file? ये है. My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है. कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का. दे दो दोनों. 161 देना, मुझे देना जरा. उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है. मेरी जो ये जरा पढ़ ले आप. कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन. My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following namely Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Werk, IGP retired, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये. The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन. प्लस कर दिया है. To trace whereabouts 30 into. वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे?
My Lord, it's, I mean, there's only this Commission will have its says that independent huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं, जरा ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that, that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप इंडेक्स ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल केसेस के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या रिकमेंडेशन हुई, उस पे क्या कॉम्पनसेशन अवार्ड हुई, वो इस रिपोर्ट में दी गई है. आई वुड नॉट अटैच द एंटायर रिपोर्ट सर विद द एनेक्स्चर्स, बट आई विल प्लेस दैट बिफोर योर लॉर्डशिप्स. और then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where page? Sir, if your lordships may kindly see. ये report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी report में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies कौन सा? Sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. लापता अफराद केस से मुताल्लिक़ बात हो रही है. इस सिलसिले में जो JIT बनाई गई, जो कमीशन बनाया गया, वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे इसकी तनख्वाहें जा रही हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. JIT तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. Wo critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant padhe? Ji. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate
appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the Commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में, sir. Production orders were issued by the Commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the Commission to such special bench for perusal of the honourable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the Commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters / cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The Registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case / cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it issues, it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी, अब 2024 में है, इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing. That's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. इनको मार करके दिया है, मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टैटिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है. मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ. मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. Have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ.
सैंपल के तौर पे मैंने लगाया। My lord. हाँ तो वो तो वही कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। ये सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? रिस्पेक्ट है ना, कुछ रिस्पेक्ट कर रही है। If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers. Contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And if वो तो ठीक है ना, those powers were ever object is exercised. not to send people to jail. No, but The what I'm object saying is to, if the people are illegally detained, to set them free. जी. वो तो बात की बातें हैं. Oh, I'm just. आप punishment में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, this is 2020, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right, sir. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law, I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief Justice, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा, हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए. नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ. इसमें कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील, नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया. उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है. ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Articles 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. We are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work.
You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government why have they not been complied with. That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into a setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. Sir, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। साहब मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज़ यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियाँ आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया, तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी पाकिस्तान बार सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफ़ा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहते हैं यार ये क्या मुझे काम करना है मुफ्त में, ठीक है? तो वो भी देखें हम, ये बर्डन हम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें इत्तेज़ाज़ साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. The commission appoint हुई है, देखिए वो 2 किस्म की कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है,
है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, presidents of four provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे. The mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना, वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है सर. We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें, PFUJ and two senior officers, senior most officers of the Inter Services Intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do. Come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed by the government. एक मिनट, सलाउद्दीन होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए। मंडे को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. ट्यूसडे को क्या केस? बेंच कंटिन्यू कर दी तो ट्यूसडे को कर लेंगे। उससे भी नहीं पता अगर हम चाहते हैं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल। अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिखें। सॉरी सलाउद्दीन साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब, हमने विड्रॉ कर ली। These appeals have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी। नहीं सर, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर। वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, the report was furnished and it is on record. इसमें लिखिए, वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं, इत्तेजाज हसन फेडरल, आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है। ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना दे, इनकी तो कुछ ज़ाती मसले हैं।
देखिए हम ज़ाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में। ये आते हैं, बताइए। तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे एंड वी वांट यू टू, वी विल डायरेक्ट दिस कमीशन to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3 जी मालिक, ये विड्रॉ कर 4 जी मालिक, विड्रॉ कर ले। नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से। जी my Lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My Lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So इसमें लिखिए CPLA 1503, 1504, 1505 and 4333, नहीं वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021, पहले वो वाला लिखते हैं 2021 का। Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए। ये इनका पहले लिखें, मेरे ख्याल में। अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें। मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें? MRS, ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें। states that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that she is not, and that she had approached the commission, क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? नोटिफिकेशन पेज बताया था ना, 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131.
What law has had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. Others present. The Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammed Sharif Virk. The chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the Commission is Mr. Justice retired Javed Iqbal, Mr. Justice retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice retired Zia Parvez, and Mr. Mohammed Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the Commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the Commission. ब्रैकेट में उसको एक दफ़ा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the Commission, however, states that the Commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itazaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itazaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, ट्विटर पे खाली कर देंगे ना, सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर शुरू कर देंगे, अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ उसी पर रखें, नंबर करेंगे तो फिर इंटेग्रिटी का इशू है ना, मैंने उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना, जैसे तुम्हारे को पर्सनल इशू है स्टेबल है तो उसको दिन सुन लेंगे पर्सनल इंटेग्रिटी नहीं होना था, देख लो. अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same, office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard,
इत्तेज़ाज़ साहब और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे। नहीं, वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से। हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड। That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases. They set and establish a pattern, and that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. साहब देखिए ना, आई नो, देखिए आई एम वेरी cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then you देखिए एक सेकंड ठहर जाइए ना, that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there, and we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे। अगर देखिए, अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फोकस हम यही रखेंगे। ब्रॉड स्कोप है, अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी तक सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज। जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें। चले करिए। मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन। ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई, इट इज द न्यू मोड ऑफ On what basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जाम्पल, are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. Then on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं, अभी आगे पढ़ लें। आगम और भट्टी 2 तो यही है। Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given the statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the दूसरे केस में हमने किया है। नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है। नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे। वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला। इसमें तो नहीं किया, दूसरे केस में। My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था। नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था। नहीं, इसी में नोटिस हो गया ना वो। हाँ? इसी में था। इसी बलोच मिसिंग पर्सन। लॉन्ग डे, बट वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग पर्सन। चले हम ये बात भी देखते। अच्छा, वो और क्या रह गया था? दी कमीशन इज डायरेक्टेड टू सबमिट comprehensive report and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not,
why not? ٹھیک ہے, پھر ہم باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے. کمیشن ہمارا ہو رہا ہے 3 بجے سے, آپ بھی تو اس میں آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے. کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو بتائیں کتنا ٹائم دیں آپ کو, کیونکہ پھر آپ دیکھ لیجیے ان کی کچھ انگزائٹی اور کمیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں. اف یو آر سیٹسفائڈ ود دی ورکنگ آف دا کمیشن اور ناٹ, وہ جب رپورٹ آپ کو دیں گے اس سے باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی, پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی آپ ہمیں ڈیٹ سجیسٹ کر دیں. تو اب ایک ان سے پوچھتے ہیں. دوسری بات, ایک ہم نے جو نوٹس لی تھی مگر انہوں نے کہا تھا, مگر انہوں نے دے ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ, سوری برا نہ مانے شعیب شاہین صاحب, ہم نے کہا تھا جی یہاں سے جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, انہوں نے کہا میں لا رہا ہوں پٹیشن, میں امینڈ کر رہا ہوں اس کو. انہوں نے نہ لائے پٹیشن اور نہ امینڈ کیے. اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی حقوق ہے, اگر وہ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو دھکے مار سے ڈنڈے مار سے ان کو اٹھایا جائے. نہیں, ان کو بہت رسوا کر رہے ہیں, بہت رسوا کیا ہے. ایک سیکنڈ سر, آپ نے تو نہیں لیا ہے نا, انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے, نہیں کیا انہوں نے پورا وعدہ. ہم اب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیس سارٹ آف ٹیکٹکس employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ٹھیک ہے, that's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if you we can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You're already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. یہ بلوچ جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا جی, جسٹ میں نے وزٹ کیا سر, اٹ از اے پیتھیٹک اسٹیٹ آف رات کو. تقریر نہ کریں, کاغذ کا ٹکڑا لائیے, فائل کیجیے پٹیشن. وہ مسٹر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. اچھا, اس میں یہ ڈیٹ کون سی دے رہے ہیں؟ یہ بتائیے اٹارنی جنرل, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. ہاں, یہ آپ کو دیں گے. کتنے دن میں آپ دے سکتے ہیں پہلے بتائیں. ان کو یہ پوچھ لیتے ہیں. خالد صاحب آپ کتنے دن میں ان کو دے سکتے ہیں, تاکہ خالد صاحب کتنے دن میں آپ ان کو دے سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا دے دیں, ٹائم دے دیں 2-3 ہفتے. بھائی آپ کو کتنے دن میں ان کو, کم از کم 3 ہفتے دے دیں, کیونکہ ہمارا اسٹاف ہے نہیں. بات کر رہے ہیں یار, ایک رپورٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں 2-3 ہفتے میں کیا ہے, ایک ہفتے کا کام ہے, 8-10 دن میں کر لے. 8-10 دن کتنے سر, کتنا ٹائم ہے؟ 10 days. 10 to 15 days دے دیں پھر سر. 10 to 15 within 10 days. ٹھیک سر, یہ 10 days میں آپ کو دیں گے, پھر آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ So if they can share production orders in, let's say, within 10 days. share production orders جلدی شیئر کر لے. رپورٹ انہوں نے 10 دن میں دینی ہے, پروڈکشن آرڈرز 2 دن میں آ جائیں گے. آپ ہمیں the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days کے بعد 2 weeks? No, 2 weeks from now. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈیٹ تک لکھ لیں گے, اپنا ذرا دیکھ لیں گے. پروڈکشن آرڈرز میں ان سے لے لوں گا 2 ہفتے میں رکھا. Mr. Faisal Siddiqui, if your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes. یہ کوئی general report. No, we don't want numbers. یہ ہمیں, آپ ہمیں نام دیں گے سب کے, بلکہ ان کو دیں گے. سر ایک گزارش اور ہے صرف جی, وہ یہ ہے, وہ فخر الدین جی ابراہیم کا کرتے تھے کہ منڈے اگر فکس کرنے لگتے تھے کورٹ, تو وہ کہتے تھے منڈے نہ ٹیوزڈے کا. ان سے پوچھتے تھے جب جج صاحبان کہ وائی ناٹ منڈے, تو وہ کہتے تھے کیس تو پتہ نہیں چلے نہ چلے, پر سنڈے خراب ہو جائے گا, تو ٹیوزڈے. ایسے یہ بتائیے اعتزاز صاحب, آپ ہمارے سامنے کبھی آئے اور آپ کا کیس نہ چلا ہو؟ نہیں. ایک ایگزامپل دیتے ہیں. نہیں,
اگر نہیں چلا تو آپ کی اٹینڈمنٹ کی درخواست آئی ہوئی ہوگی. ہماری طرف سے ہم پورا بورڈ ختم کر کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں 3:30 بجے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آج ہم آپ کو دیر تک سنتے ہیں, مگر آج ہماری JCP کی میٹنگ ہے, Very grateful. وہ 3 بجے رکھی ہوئی ہے. Otherwise we try to finish the board, at least I try to humanly possible. One of our colleagues is not well. She is seriously unwell and she is come and sat in court. بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں صرف ایک بات کرنی تھی. بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں صرف ایک بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں, پروٹیسٹرز کے بارے میں بات کرنی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پٹیشن پینڈنگ ہے ہماری وہی ریکویسٹ کریں. آپ نے کچھ نہیں فائل کیا, مگر ہم نے اٹارنی جنرل کو آلریڈی کر دیا ہے. نہیں سو فار ریسپانس. آپ نے کچھ نہیں فائل کیا, لیکن پھر بھی ہم نے پروٹیسٹنٹس کے معاملے کے اوپر, مظاہرین کے معاملے کے اوپر اٹارنی جنرل کو کہہ دیا ہے. مسنگ پرسنز کیس, لاپتہ افراد کا کیس اگلی سماعت منگل کو ہوگی. جامع رپورٹ دیں. ریاست کی طرف سے کیا موقف ہے, کیا ان کا سٹیٹمنٹ ہے, ریاست کی بہاف پر یہ رپورٹ پیش کریں. اس کو دینے کی ہدایت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کی گئی. انہوں نے کی. آمنہ مسعود کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 2005 میں آمنہ مسعود جنجوعہ, ان کے کیس کو سامنے لایا گیا. مسعود جنجوعہ لاپتہ ہوئے. اب اس سلسلے میں کیا ہوا ہے, دیگر مسنگ پرسنز کے لیے اس سلسلے میں کیا ہوا ہے, یہ بھی بتایا جائے. رجسٹرار کو ہدایت کی گئی ہے, پوچھا گیا ہے کہ کمیشن کی کارکردگی کیا ہے وہ بتائیں. ناموں کے ساتھ میں مسنگ پرسنز کو کتنے لوگوں کو ٹریس کیا گیا, کتنے لوگوں کو ریکور کیا گیا, یہ سارے کا سارا ڈیٹا لے کر آئے. اعتزاز احسن سے بھی بات انہوں نے کی اور کہا کہ آپ کا معاملہ بھی دیکھیں گے, لیکن ہمارا فوکس, ہماری ساری توجہ اس وقت مسنگ پرسنز پر ہے, نہ کہ ان لوگوں پر کہ جو لاپتہ ہوئے اور پھر واپس آ گئے لیکن عدالت تک نہیں آ رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم سامنے آ گیا. نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنے پر موجود بلوچ فیملیز کو ہٹانے سے روک دیا. بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ, ویسے تو لوگ شاہراہ دستور پر دھرنا دیتے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے, جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم سامنے آ گیا ہے. نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنے پر موجود بلوچ فیملیز کو ہٹانے سے روک دیا ہے. بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا حکم دیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے, ویسے تو لوگ شاہراہ دستور پر 3 ماہ دھرنا دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے, بڑا حکم سامنے آیا ہے. نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنے پر موجود بلوچ فیملیز کو ہٹانے سے روک دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے. اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں. عمر آصف نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمر بتائیے مزید کیا کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. جی بالکل, دیکھیں بلوچ مظاہرین کے اسلام آباد پولیس کی جانب سے مسلسل ہراساں کیے جانے کے بارے میں درخواست دائر کی گئی, جس کی سماعت جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے کی ہے. اس کے میں پٹیشنر سمیع الدین بلوچ کی جانب سے وکیل عطا اللہ کنڈی پیش ہوئے ہیں. اب ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب پولیس جو چیز آتی ہے ہماری طرف روک لیتی ہے, اسپیکر اٹھا کے لے دیے جاتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے, جس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا. ویسے تو لوگ شرائع دستور پر 3 ماہ دھرنا دیتے ہیں. شرائع دستور پر لوگ دھرنے میں عدالتوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے, لیکن الیکشن کمیشن لوکل گورنمنٹ کا جو ہے الیکشن بھی نہیں کرا پاتی. اور اس کے بعد جو ہے بڑا حکم سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جو نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنے پر موجود بلوچ فیملیز ہیں ان کو ہٹانے سے روک دیا گیا ہے. بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کیا جائے, ایسا بھی کہا گیا ہے.